Periodical thermodynamics. इसमें जाने से पहले जो है you must know the differentiation between two terms. Classical thermodynamics, quantum mechanics, and statistical mechanics like statistical thermodynamics. Right? एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है differentiate between three types of thermodynamics. So आप तीन कॉलम बना लीजिए. सबसे पहले में लिखा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, दूसरे में लिखा क्वांटम मैकेनिक्स, पहला हो जाएगा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, सेकंड वन क्वांटम मैकेनिक्स और थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में लिखे it deals with क्लासिकल में लिखे it deals with MACRO macroscopic properties of matter. Macro, it deals with macroscopic properties of matter. Properties of matter and describes describes the behavior of large number of molecules, large number of molecules in terms of इसके रूप में in terms of properties such as pressure, volume, temperature, composition, etc. Right? Now, quantum mechanics. It deals quantum mechanics. It deals almost exclusively with matter at a macroscopic level, MICR. Macroscopic level. जैसे आप लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी फिनोमेना आप लोग पढ़ते हैं वो आप अधिकतर कहते हैं कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट? तो जो इक्वेशन से लेके आप पूरा ये मॉडल पढ़ते हैं तो ऑल दोज आर डेल्टा एक्स इज डेल्टा पी इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू h upon 2 by क्या है तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है दे आर एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा. इसी में लिखिए it tells us that each microscopic system can be described
by wave function. श्रोडिंगर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? इसी में देखें, it does not indicate which wave function of a molecule will represent the state of the system at a given instant. अब देखिए स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स में थर्मोडायनामिक्स जो है, it provides a link between quantum mechanics and classical thermodynamics. उसी में लिखा दिस डिसिप्लिन ये शाखा जो है, दिस नहीं द डिसिप्लिन करिए, द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द computation of MACR, macroscopic properties, deals with computation of the macroscopic property of the matter from the data on the microscopic properties of individual atoms. Individual atoms ब्रैकेट में लिखें और molecules. Is called statistical mechanics or statistical thermodynamics. बस ये कंपैरिजन हो गया अपनी statistical mechanics. Statistical mechanics can be applied easily to simple ideal systems such as monoatomic and diatomic gases. Monoatomic and diatomic gases. ये कहीं न कहीं आप यूज या इसका जिक्र या इसका रेफरेंस जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का पढ़े हुए थी. If I say that the fundamental contributions to the statistical mechanics or statistical thermodynamics were made by the first name comes into my mind is that one Maxwell and
Boltzmann. Then Gibbs and several other scientists, Max Planck, Einstein, AC Bose, Fermi, Dirac, etc., etc. However, Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speed or molecular velocity, we have studied about this reference in intermediate and in BSc classes. The BSc में आपसे कहा जाता है on increasing the temperature, particularly for every 10 degree rise in temperature increases the rate of the corresponding reaction by a factor of 2 or 3. And this is known as temperature coefficient. ताप गुणा, right? Temperature coefficient. And this is explained on the basis of MD, Maxwell-Boltzmann statistics or Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speeds. You are पढ़ते dNc upon n equal to 4 pi m e to the power minus mc square upon twice kg dc into c into dc ये फॉर्मूला आता है. तो जब आप एक T3 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर, कंडीशन इज दैट T3 is greater than T2 is greater than T1. जब आप dNc upon n एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नीचे आपका इस तरह का आता है, राइट. कंडीशन मैंने आपको बता दिया T3 सबसे ज्यादा है वैल्यू. तो ये पूछा जाता है कि व्हाई फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2 to 3. व्हाई? इंटरमीडिएट में भी जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं वहां पर भी है, और डिवाई लिमिटिंग लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं वहां पर भी है. हर जगह इसका लिखा है. क्यों कोई बताइए? समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ? रेफरेंस आया समझ में नहीं आपको? क्या बता रहा बोल रहा हूँ? या प्लॉट करना पड़ेगा? बताइए कोई तो बताइए भाई इन लोगों को. सर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है. इंक्रीज होती है. थ्रेशोल्ड एनर्जी अरे देखिए, जब आप सिंपल कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, मतलब इन ऑर्डर टू हैव अ रिएक्शन दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. होना जरूरी है, राइट. एंड एवरी क्वेश्चन है एवरी collision is not effective. Every collision is Not effective. Not effective. मतलब प्रत्येक टक्कर प्रभावी नहीं होती है. केवल उन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होगा जिनकी एक मॉलिक्यूल्स की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. Only actually what happens is for every rise of 10 degree temperature, the number of effective collisions अतः प्रभावी टक्कर जिनसे प्रोडक्ट का निर्माण होगा, the number of effective collisions increases by a factor of 2 to 3 approximately. Therefore, the rate of reaction increases in the same order because the rate of reaction is directly proportional to the number of effective collisions. ठीक है ना? इसलिए जो है क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या 10 डिग्री तापमान बढ़ने से
लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया की या रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी जो है लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है प्रत्येक 10 डिग्री Increase in temperature. तापमान बढ़ने से। क्लियर? तो जो वो ग्राफ का नेचर आ रहा है वो 2 से 3 गुना लगभग, क्योंकि आपने डीएनसी अपॉन एम संगठन पॉलिजेंस का वो प्रभाव जो प्रभावी है उनका अनुपात, उनका रेशियो 2 से 3 गुना बढ़ा है। दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट से लेके आप लोग यहाँ पढ़ते जाते हैं। अब इसमें जो है स्टैटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो जो एक तो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स पहला, उसको लिखिए आप पहले। हेडिंग टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। पहला लिखें एमई स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। इसमें जो है आपके लिए द पार्टिकल्स आर एज्यूम्ड टू बी डिस्टिंग्विशेबल। द पार्टिकल्स का आप अंतर भेद कर सकते हैं। द पार्टिकल्स आर एज्यूम्ड टू बी particles are assumed to be distinguishable and any number of particles may occupy the same energy level. Consider a system of n capital and distinguishable particles. Consider a system of n capital and distinguishable particles. Occupying energy levels epsilon 0, epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2, etc., etc. The total number of arrangements for placing n0 particles, small n होगा, n0 particles in the ground state energy level epsilon 0, comma, n1 particles in the first excited energy level, n1 particles in the first excited energy level epsilon 1, right, comma, n2 particles in the second excited energy level n1 particles in the second excited energy level epsilon 2 and so on. देखिए ये जो टोटल n है ये आपका जो पहला है n1 n2 n3 जो लिखा हुआ है वो एनर्जी स्टेट से बना हुआ है, अर्थात n1 n2 n3 and so on
टोटल क्या है एन तो ये n जो पार्टिकल्स टोटल है जिनमें हम अंतर विहित कर सकते हैं जो डिस्टिंग्विशेबल हैं तो उसको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इंक्लूडिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल जो कि एप्सिलॉन 0 है अलग अलग एनर्जी स्टेट में उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये हो सकता है कि जो आपने लिखा हुआ है कि N1 पार्टिकल्स को एप्सिलॉन 1 N2 पार्टिकल्स को एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं where capital N are total number of particles and condition is that total N are distinguishable particles having or occupying energy levels epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2 and so on and so forth. The thermodynamic probability capital W लिखते हैं capital W to determine how many microstates corresponds to a given microstate can be given by W is equal to factorial n upon n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial and so on so forth nz factorial is equal to factorial n upon summation of ni factorial. So short term ऐसे लिखिए हमेशा बोला सर तो कल तक हम आपको हम इंट्रोपी या रेजिडुअल इंट्रोपी की बात कर रहे थे S इक्वल टू K log W W नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस या अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे ना तो n डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी अब इसको हम क्या बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी उसका फॉर्मूला ये है फैक्टर n अपॉन डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स जो है उनका फैक्टर तो इसको हम आगे पूरा ना कहेंगे शॉर्ट कर दे तो मेथड्स की उसको समीशन दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 where this capital N is equal to summation of sigma ni मतलब ni के जितने टर्म्स हैं उसका एडिशन कैपिटल N in the our equation capital N is the total number of particles capital N is total number of particles and summation is over all the energy levels समीशन जो है SUMMATI समीशन जो नोटेशन लिखा हुआ एंड द समीशन इज ओवर ऑल द एनर्जी लेवल्स इट इज पॉसिबल टू रियलाइज a given energy level in more than one way एक से अधिक प्रकार से शो कर सकते हैं possible to realize a given energy level in more than one way इसका मतलब है that is more than one quantum states has the same energy
has the same energy. More than one quantum state has the same energy. आपको क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ाया जा रहा होगा कि अगर if there are more energy states having energy levels having the same energy, that is called degeneration. Suppose P को आप Px, Py, Pz लिखते हैं, तो Px, Py, Pz में तीनों की एनर्जी क्या है? सेम लेवल है. Likewise D में D हाई ऑर्बिटल्स जो आप देखते हैं, F में 7 लिखते हैं, तो ये degeneracy in the case of P orbital that is 3. In the D it is higher, for F it is 7. That is the energy level, energy states having the same energy, same amount of energy. तो जो ये कह रहा है कि more than one quantum states, अगर क्वांटम नंबर्स की संख्या 3 है, n equal to 3, तो कितना आएगा? अगर 6 है तो कितना आएगा? 9 है तो कितना आएगा? कई एनर्जी स्टेट्स ऐसे होते हैं, क्वांटम स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसका एनर्जी लेवल सेम है. E equal to En equal to n square h square upon 8 pi square m लिखते हैं ना तो E. तो उसमें जो है जो वन डायमेंशनल होगा तो उसमें तो एक है, लेकिन जब थ्री डायमेंशनल में आप पढ़ते हैं तो उसमें क्वांटम स्टेट्स कई आते हैं. जैसे अगर सपोज हम कहें एनर्जी En इक्वल टू 6h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m है, या E इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m है, तो उसके लिए क्वांटम स्टेट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आता है जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी लेवल उसका क्या आता है? सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहाँ पर हम उसको डिजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं और यहाँ पर हम उसको डिजनरेसी कहते हैं. क्या बोलेंगे? डिजनरेसी. ठीक है. Such energy levels is said to be degenerate उसी तरह से उसको एक तरह से आप उसको मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माना लेट डिजनरेसी को यहाँ से जी से दिखाता हूँ. लेट जी आई, लेट माना जी आई with the degeneracy or multiplicity of the energy level epsilon 1, epsilon I, Is the or multiplicity of the energy level epsilon I, energy level epsilon I आयत के लिए है ना, आयत एनर्जी लेवल के लिए. This means that if there is one particle, in the ith energy level, comma, there are GI waves प्रकार, there are GI waves, W-A-Y-S waves of distributing it. ठीक है. इसको हम जो है आयत एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी GI है, इसको हम GI वेव्स प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. लाइकवाइज लिखिएगा नहीं, for two particles in the ith level, अगर ith level में कितने पार्टिकल हो? दो. then there will be GI2, GI square, ways of distribution, possible distribution के प्रकार हो सकते हैं. if हटा दीजिए, for ni particles in the ith level, for ni particles
in the ith level, there are, क्या हो जाएगा? 2 के लिए G8 स्क्वायर है, 3 के लिए G8 3 है, 4 के लिए G8 4 है, NIH के लिए NI के लिए G8 to the power. There are G8 to the power NI particles distribution. For NI particles in the ith level, there are, for NI particles in the ith level, there are G to the power NI possible distributions. Possible. Possible distributions. Possible distribution. Possible particle distribution. Hence, the thermodynamic probability for the system of n particles, here, or the system of n particles is given by, probability किसे दर्शाते हैं? W is equal to factorial n into summation I Z I to the power ni upon ni factorial into constant लिखा, इक्वेशन नंबर 2 का थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का पहले लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ. थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी is given by W equal to n factorial into summation of, जो कि ith के लिए है, the summation of I into Gi to the power ni upon ni factorial into some constant. But we know that this thermodynamic probability is related to what? Entropy. This thermodynamic probability is related to entropy. कल ही तो बताया. देखिए, it is well known that entropy S and probability W of a given state of a system are related by S is equal to K log W. ब्रैकेट में लिखते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 3 कर दें. मैथमेटिकल है, ये पूरा मैथमेटिक्स का जो है. द प्रोबेबिलिटी must be maximum for an equilibrium state so that S equal to K log W max. Equation 3 होगी. इक्विलिब्रियम स्टेट में ये जो इक्वेशन है 4 मैक्सिमम होगी. 4 होगा. इक्वेशन 4 होगा सर. जो भी आता है. S equal to K log W maximum. ये इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की इक्वेशन. हाँ, मैक्सिमम हो सकता है. It is more convenient to maximize
to maximize the logarithm of W, it is known from calculus that कैलकुलस के आधार पर हम जानते हैं it is known from calculus that at the maximum comma the derivative of a function vanishes, समाप्त हो जाते हैं. The derivative of a function vanishes, hence b differentiation of ln w, b log w, d ln w is equal to del log w upon del n1 into dn1 जो नीचे आएगा उसी से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस d ln w upon dn2 into dn2 प्लस so and so forth करके del ln w upon del n3 into dn3 plus so and so forth. इसे दिखाई दे रहा है? हाँ सर. Equal to sigma I del ln w upon del ni into dni. So the maximum means if range is equal to 0. इसको हम अलग अलग उसमें न कह के मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, summation of I del ln w upon del ni into dni equal to 0. इक्वेशन नंबर 5 करेंगे. अब इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका निकलने जा रहा है जो आपको पूरे इसमें जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में यूज होगा, because we are calculating the thermodynamic probability or total number of ways of the distribution of any particles in any given energy level. Therefore, correlating with the degeneration, हम आगे एक रिलेशन आएगा जिसको हम बोलेंगे पार्टीशन फंक्शन. And this partition function, how this partition function is related with enthalpy, entropy, free energy, so on and so forth. जितने thermodynamic function आपने पढ़े हुए हैं, चाहे Helmholtz function हो कोई भी हो, उससे how this partition function is related to establish the relation between the classical thermodynamics and this partition function. ये एक हम लोगों के टाइम में कंप्लीट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था. Establish relation between thermodynamic function. If we are dealing with monoatomic gas only translational motion, the function at that time is said to be translational partition function. If we are dealing with diatomics, we also talk about rotational energy. Therefore, we talk in that condition rotational partition function. Likewise, we discuss about electronic partition function and vibrational partition function. So, summation of all the partition functions. Since entropy is an additive property or multiplicative property? अभी आएगा. क्या लिखा है? अभी तक यहीं तक लिखा है. इक्वेशन नंबर 5 हो गया. To a closed system,
to a closed system of independent particles or a closed system of independent particles. Number one, guess करके लिखे. Number one, the total number of particles is constant. Total number of particles is constant. अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं बात करना चाह रहा हूँ. नंबर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, दैट इज n जो है आपका कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, इक्वल टू सिग्मा i n I इक्वल टू कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 6 कर दो इसको. राइट. नंबर 2, दूसरी क्या कंडीशन है क्लोज सिस्टम के लिए फॉर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स? द टोटल एनर्जी U, the total energy U of the system is constant, that is U is equal to sigma Ni epsilon I is equal to constant. Total energy देखिए कोई भी सिस्टम है क्लोज सिस्टम, I am talking about closed system of independent particles. These two fundamental requirements are essential. Number one, the total number of particles are constant. जो आपने N1, N2, N3 सबको जोड़ के कैपिटल N का है, उसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सिग्मा I N I, चाहे वो कितनी बार आया हो, 4 बार आया तो N1 plus N2 plus N3 plus N4, it must be constant. And energy must be constant, that is U सिग्मा Ni epsilon I. epsilon I एक के लिए एक एनर्जी लेवल के लिए, दूसरे के लिए दूसरी वैल्यू होगी. तो 1 into epsilon I, 2 into epsilon I, तो टोटल चूंकि Ni है तो सिग्मा लगा दिया, सिग्मा Ni epsilon must be constant, and these two requirements are essential for any closed system for n independent particles. Equation number 7. The constancy of the total number of particles implies that the constancy of total number of particles implies that here dn is equal to sigma dni equal to 0. क्वेश्चन नंबर 8 कर लें. And the constancy of total energy implies that, du, you are there, du is equal to sigma ni dni equal to 0. क्यों? तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है. किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो जीरो आता है. तो d इक्वल टू सिग्मा i dni, सॉरी सिग्मा i एप्सिलॉन i dni equal to equation number 9. Taking logarithm of the both sides of the equation number 2, क्या है 2 s equal to k log w है 3 में 2 में क्या taking logarithms on both sides of the equation number 2 ही करें. तो 2 में आपका हो जाएगा, देखिए
क्या है बताइए, log w, log w इज इक्वल टू log n फैक्टोरियल ऊपर है प्लस सिग्मा i n i log zi माइनस सिग्मा i l log n i फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 10 कर दो। log m upon n लगाया, क्या लगाया? log n log m upon n इक्वल टू log m माइनस log। इक्वेशन नंबर 2 में ये तो है ये, राइट? तो ये जो है इसमें हमने log m upon n लगाया। अभी निकलेंगे तो नहीं। अब लिखें एक नया इक्वेशन यहाँ पर आएगा, ये आपको पूरे इसमें याद रखना पड़ेगा। यूजिंग STIRLIN Stirling's approximation। यूजिंग Stirling's approximation तो क्या है? log x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x log x माइनस x होगा। याद रखो, log x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x log x माइनस x। माइनस ब्रैकेट में लिख दें when x is large, x is large इक्वेशन नंबर 11 कर रहे हैं। log x factor using this approximation for log ni factor comma equation 10 becomes log w is equal to, ये वाला इक्वेशन जो है log n फैक्टोरियल कैपिटल N प्लस सिग्मा i n i log gi माइनस सिग्मा i n i log n i प्लस सिग्मा i n i प्लस कांस्टेंट। अभी आपने ऊपर लिखा है कहीं पर, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, ये हो जाएगा n log n माइनस n। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे ना, ये वाला तो लिखिए और रेस्ट लिख दो। आगे लिखें इसको n log n सिग्मा i n i log gi माइनस सिग्मा i n i log n i। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा i n i को क्या लिखा है? क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल ये n और ये n पहले लिखिए, आप तब काटेंगे आपको। आप लोग देखेंगे पहले उसको अगले वाले इक्वेशन में, तब कैंसिल आउट करेंगे। आपने ऊपर लिखा हुआ है for a closed system of independent materials the following two requirements लिखा है ना इसमें, total energy is constant, total number of particles constant, लिखा है ना? इसीलिए ये total number of particles है, ये constant हो जाएगा, n हो जाएगा तो कैंसिल एक साथ रखे, कैंसिल आउट कर देंगे।
तो आपका ये बचना चाहिए जो इसमें आया है, मैं दे रहा हूं। log w इज इक्वल टू n log n प्लस ये यही इक्वेशन है माइनस प्लस दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है 13 करते हैं इसको इक्वेशन नहीं 12 है ना। देखिए इसे दिक्कत हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने पेंसिल आउट कर दिया था यहाँ का माइनस एन और यहाँ का प्लस है, उसके बाद जो इक्वेशन बचा है उसको लिखिए। कोई दिक्कत आगे लिखिए। इक्वेशन 12 आ रहा है क्या है? 12 ठीक है। डिफरेंशिएटिंग and taking capital N and GIR constant, कैपिटल N को और GI को कांस्टेंट लेने पर ये आ जाएगा B ln W is equal to sigma I ln GI dNI आ रहा है ये माइनस सिग्मा, वही इक्वेशन है log ni dni माइनस सिग्मा ni dni, ये आ रहा है देखिए। d log w इज इक्वल टू ये आएगा सिग्मा i, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिग्मा i log gi dni माइनस सिग्मा i log ni dni माइनस सिग्मा ni dni। इक्वेशन 13 करना है इसको। इसी को लिखते हैं आप सिग्मा i ni dni equal to sigma I ni dni upon ni equal to sigma I dni equal to 0। इसने इसको भाग लगा दिया, माइनस था तो नीचे कर दिया। log m upon n होता है ना, आ रहा नहीं? log m माइनस log n लगा दिया। इक्वेशन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर hence at equilibrium d log w equal to sigma log gi dni log gi dni minus sigma log ni dni equal to 0। क्यों? क्योंकि आपने कहा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी एंट्रोपी की 0 होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 15। Equation number 15 gives the change in log W
change in log W, which results, जो कहाँ से पैदा होता है, which results when the number of particles in each energy level, number of particles in each energy level is varied, change होता है, VARIED. Energy level is varied. If the system is open, if the system is open, then Ni would be, then Ni would vary without, then Ni would vary without restrictions. Ni would vary, change होना चाहिए without restrictions, and the variation would be independent. And variation would be independent of one another. Variation हो रहा है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, and variation would be independent of one another. However, if the system is not open, if the system is not open but closed, system is Not open, closed. closed, then capital N is constant. Capital N is Constant. constant. The desired solution of the above equation can be solved. इसको सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग लैग्रेंजेस मैथमेटिक्स है, क्वांटम में पढ़ा होगा लैग्रेंजेस, LAGRANG, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, LAGRANG, लैग्रेंजेस undetermined multipliers. Lagrange's undetermined multipliers. Equation 15 था ना लास्ट वाला? हाँ सर. Rewriting equation 15, we have rewriting equation 15, we have sigma I log Zi upon Ni into Vni equal to 0. सिक्सटीन है. 69 मेरा इक्वेशन तो इसको आप फिलहाल आगे लिख दीजिए, क्योंकि लैग्रेंजेस अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर से सॉल्व किया गया है, ये आता है इसके आधार पर Ni, आप डायरेक्ट लिख दीजिए Ni इक्वल टू Zi e टू दी पावर माइनस अल्फा इंटू बीटा एप्सिलॉन. ये लास्ट इक्वेशन आता है जहां अल्फा और बीटा जो है आपके लैग्रेंजेस कांस्टेंट है. अल्फा और बीटा की वैल्यू जब आगे जाके आप
ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अल्फा इज 1 और बीटा इज 1/kT साइड आता है जब कैलकुलेट करेंगे इसको। एनीवे दिस इज बोल्ड, ये वाला जो है दिस इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या है? Boltzmann distribution law, and it gives the most probable distribution of a macro state. Most probable distribution for a macro state. अब यहाँ पर देखिए जो GI लिखा हुआ है ये क्या है? ये है आपके degeneracy of the ion energy level, right? Now this degeneracy जो है इसी को हम आगे पार्टीशन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टीशन फंक्शन शॉर्ट में PF बोलेंगे। एंड इफ इट इज फॉर मोनोएटॉमिक सिस्टम, मोनोएटॉमिक एसिड, तो इसको हम बोल देंगे ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। अगर डायटोमिक्स के लेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। और वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए अगर देखेंगे तो क्या आएगा ये? वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। और इन एडिशन टू दैट देयर इज वन मोर पार्टीशन फंक्शन जिसको इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। तो मैं अभी कह रहा था सिंस एंट्रोपी इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, it is bidirectional property, therefore total partition function is equal to translational into rotational into vibrational into reactive। तो जब भी आप इस GI के लिए पार्टीशन फंक्शन की बात करेंगे मोनोएटॉमिक ऐसे केस में 1 होता है। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? 1। और रोटेशनल में कितना होगा? 2। रोटेशनल के केस में कितना होगा ये? पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोप में कहीं पढ़ा होगा। तो लाइकवाइज की वैल्यू को उसमें पुट करते हुए अलग-अलग रिलेशंस आपके हैं। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए आता है twice pi m kT upon CH2 into T। लाइकवाइज अलग-अलग पार्टीशन फंक्शन आएंगे, सॉरी एक्सप्रेशन आएंगे, देन वी आर सपोज टू इंटररिलेट और एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनामिक फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन कहाँ से आया? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। और हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक फंक्शन की, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरलिंक्स बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स लिखा है आपने इस तरह से करें। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला है, दोबारा करेंगे।